भोले ही लगते हैं क्या ऊपर से, लेकिन ये है नहीं। अजय जी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाय तबू, मैं क्या कहूँ? जाने ही दो। नहीं हूँ, जाने दो। हाय तबू, दिस साइड, इधर सामने आपकी। तबू, आपने एक्शन की बात की है, तो एक्शन के लिए कितनी तैयारी की यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अलग दिख रही है यहाँ पे एक्शन करके। मैंने ऑनेस्टली कुछ तैयारी नहीं की, जो कुछ किया अजय सर ने और सारी एक्शन टीम ने मुझ पे मेहनत की, और एक्चुअली मेरे लिए बहुत आसान बना दिया, क्योंकि एक्सपर्टीज जो इन लोगों को है एक्शन में, आई डोंट थिंक किसी और को है। तो मुझे वही करना था जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलते थे, और मैं अंधाधुंध कर जाती। सो रियली आई but I knew that I wouldn't have to prepare, because whatever I do, it will be less than what I would be required to do on this film. अजय, आपके लिए त्रिशूल से एक्शन करने का कैसा अनुभव रहा? I think it's very interesting. थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़ा नयापन भी था उसमें, तो डिज़ाइन भी करना था, उसको एग्जीक्यूट भी करना था, और उसको परफॉर्म भी करना था। तो आई थिंक इट इज़ वेरी नाइस। और एक सेंसिबिलिटी मेंटेन करके रखनी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाथ में आपकी त्रिशूल। हेलो अजय सर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ऊपर। Hi Ajay sir. Firstly, great trailer. I wanted to ask you that from Yumi or Hum to Bholaa, what is the evolution of yourself you have seen as a director, the changes you have observed? I really don't know. I mean, you grow every day, and you learn from your mistakes, other people's mistakes, other people's good work, your own work, and you can't pinpoint a thing, but you keep growing and you keep learning. This is Saurabh Bhai from News Nation. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा ट्रेलर है, और 3D में विजुअल ट्रीट आपने दी है सबको। और क्वेश्चन पूछने से पहले हर हर महादेव, जिस तरीके से आपने इसको शूट किया डिवाइन नगरी में, जब भी आप जाते, क्योंकि आपको बहुत देखा जाता है वहाँ पे, और जिस तरीके से आपने भस्म लगा के, इंटेंस आपकी आंखें तो हैं ही, और आपकी इंटेंसिटी ने भी एक जो विजुअल ट्रीट हमें अपनी 3D में दिया है। सो तबू जी, आप कैसे देखते हैं इनकी इंटेंसिटी को? और क्योंकि आंखें तो इनकी है ही, और जिस तरीके से भस्म लगा के, कैसा अवतार अजय सर का आपने देखा है, जो अभी 3D में हमने भी देखा है? आई थिंक इस रोल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर इतना फिट होता जितना ये फिट होते हैं। और आई थिंक इनका जो एक सारा इमेज और इनकी जगह है, वो ख़ास तौर पे डिफाइन होती है इंटेंसिटी से। इसका ये मतलब नहीं कि ये दूसरी कैरेक्टर्स को उतना सूट नहीं करते, लेकिन जैसे ये हैं, जैसे ये रियल लाइफ में भी हैं, तो उन्होंने कैरेक्टर्स भी ऐसे चुने हैं, और वो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान है और बन गई है, ये इतना मैं कह सकती हूँ। Ajay sir, here. So, sir, this film is a remake of Tamil film Kaidi. Whether you had any opportunity to interact with director Lokesh on changes क्या हुआ? should be made? Or No, not really, but through people we've been in touch, and we are discussing a few things for the future also. Hello. So yeah, it's left. Correct. So Sumit Kar from Kolkata Media. कोलकाता So से while making this film, आपको acting या direction, which process you enjoyed the most? You enjoy the process of working. Wow. You can't segregate between acting and direction, because it's all one. You enjoy in totality filmmaking. You enjoy waking up in the morning, going to work, and both are a part of it. So it's a combination. You can't enjoy one without the other, and the other without. Hello Ajay sir, right at the center. Hi, thank you. Yeah, I had to ask you, after Shivai, which was already quite a benchmark when it comes to action, because we saw that you really pushed limits, and here we see the limits are pushed even harder in the best way possible. Something that comes to you so naturally, thanks to your father, is probably something you've designed. But here, Sarah, there are some practical stunts which really look absolutely crazy. It seems to be even humanly impossible.
So what was the thought process behind it? Was it something you went to the drawing board and consciously you had to make those action pieces? See, for one, the first thing when I make an action film, my biggest first attempt is, uh, without naming, I would say most of the films I see in our country, they are fabulous action, but they're always inspired or, you can have a resemblance to some sequence of an Hollywood film or a European film or some film or the other. So, especially when action is concerned, my whole intention is that create something new, execute it in a different way. That's why in Shivaya also and in this also people say there are shots which they really don't know how they must have been taken, and then plan it, and then I mean it's a whole process. But it starts basically with we need to create something new, our own, and keeping it stylized, but keeping it very very Indian. Not westernizing it completely. Hi Ajay, Tabu, this is Komal from Indian Express. Since this is an action film, out and out action, we saw so much happening on the screen. I want to understand from you, what are the safety measures you take on set? Because even this morning, Mr. Bachchan shared that he had an accident too, and we hear that quite a bit. So, what are the safeguards? Look, it's like our job is difficult and easy also, I would say. Mr. Bachchan, from where he started, and then later when we started, at that point of time, we used to do action. There were no mattresses, there were no safety measures, there were no cables. We've injured every part of our body. Mr. Bachchan has done shots which you can't even imagine. I remember him getting injured during we were doing Wages Up also, which he insisted we had to jump from something. It must be 30 feet, 3 floors high, and I told him, let's not do this shot. It's a night sequence. I mean, we can work it out with duplicates, and we both were supposed to jump together. And he insisted, let's do it, and he had an injury then also. So it's that enthusiasm. But now I would say, now things are much more easier. I think there are cables, there are a lot of safety precautions. There are ambulances on set, there are doctors on set, there are paddings and lots of stuff. So it's become relatively much easier, thank God, because while we are aging, things are getting easier also. Yeah, so there is a lot of it. It's like, it's like also driving a car. I mean, you can have an accident any time, but you try to be safe all the time. So it just happens sometimes. We try to take all the safety measures, but there are risks to it, definitely. Tabu, is it scary though? Well, if you think about it, it is. There's always 1% chance of you getting injured. And actually, in fact, even before you asked this question, I wanted to maybe conclude whatever by thanking my entire action team for keeping me safe, for keeping everybody safe. And this is exactly what I wanted to talk about, that it's really, really not easy to execute an action film. It's not easy to physically achieve so much and do so much and just do it actually there in real time. You need a set of really dedicated people and who care about people's lives, who will protect you and make you do the right things, and not make you do what you should not be doing. And I had a fantastic team, and I want to thank each person of that team. Yadavji, Suri, our team from overseas, Rama, him, most importantly, everybody who did the cabling, and people who were our body doubles sometimes. So yeah, it is scary, but now my fear has really reduced by a huge percentage. I enjoy it now. Ajay, Yes, there's a question. This is Ravi from ABP. अजय सर, क्योंकि बच्चन जी की इंजरी की बात हो रही है और आपने भी बताया कि पहले कैसे जो सुरक्षा के जो मानक थे, जो स्टैंडर्ड्स थे, वो काफ़ी लो थे और अब हाईटेक चीज़ें आ गई हैं। आपका भी करियर 30 साल पुराना है, 30 साल से ज़्यादा समय से आप काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्शन फिल्मों में आपने काम किया। कभी एक्शन करते हुए कोई ऐसा मौका आया जब आप काफ़ी खुद डर गए हों? क्योंकि आपने भी जब 90s में काम किया तब भी इतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे,
डरने की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी हड्डियां बॉडी की टूटी हुई हैं और काफ़ी इंजरीज हैं, और अब रोज सुबह जब उठते हैं तो वही सब याद आती है जब दर्द होती है। तो है, बट एज आई सेड इट्स पार्ट ऑफ द गेम। Hello, Ajay sir. To your right here, please. Thank you for an excellent trailer. Wanted to know how difficult or different the production process was to bring out this movie in IMAX. Yeah, so A for one, you have to plan it, you have to shoot it accordingly, according to 3D. There's a different technique to it. And then it's a whole process, and then the whole team comes in from IMAX, and they do a fabulous job, and the visual they create is outstanding. तब्बू जी यहाँ पर या हाय मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अजय जी बहुत ही सुंदर बनाया है आपने। यहाँ तब्बू जी आपसे जानना चाहूँगी, जनरली दिखाया ये जाता है कि महिला पुलिस जितनी भी महिला पुलिसकर्मी घायल नहीं होती है, थोड़ा सा काम करके निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर शायद बहुत ही कम ऐसा मैं मौका गिन सकती हूँ उंगलियों पर कि जहाँ पर महिला पुलिस को भी दिखाया गया कि वो घायल है। इस ट्रांजिशन को कैसे लेती है? बहुत सटल सा एक मैसेज देता है। मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ इस कैरेक्टर को लेके, और द फैक्ट दैट आई वाज चोजन फॉर दिस रोल मुझे बहुत गर्व है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप अप है, प्रोग्रेस है मेरे कैरेक्टर्स में। एंड जैसा आपने कहा, जैसा हम महिला अफसर को देखते हैं और महिलाओं को देखते हैं, और ये सिर्फ ज़ख्मी नहीं होती, बल्कि ज़ख्मी होने के बाद भी इनफैक्ट पूरी फिल्म में मैंने एक स्लिंग पहना है, इसलिए मेरे लिए ये एक्शन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे पास अपने दोनों हाथों का सपोर्ट नहीं था एक्शन करने के लिए, भागने के लिए भी। तो ये कैरेक्टर एक्चुअली ओरिजिनल में मेल एक्टर नारायण राम सर ने किया था, तो उसको चेंज करके इन्होंने महिला कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब प्राउड मोमेंट है, मैं कह सकती हूँ। Ajay, I've got a question here, a little on the right hand side. Ajay, so last year when Drishyam 2 came, so before that Brahmastra was the last big success, and it was a long wait, and then Drishyam 2 came, and it turned out to be a blockbuster. Now this year again, it has been a wait for a very long time, for the last few weeks, that a new film comes and does some great business. And a lot of expectation is out there on Bholaa to do well. So how are you looking at that as an industry person, as someone who has been there for 30 years as a producer? I don't know. Right now, I'm not thinking about release. I'm thinking about concentrating and finishing on the quality of the film, because the post-production, little bit of tweaks or whatever is left, we are doing. So I don't know when I'll start thinking about the release. But yeah, we just had Pathaan, which did That's right, yeah. fabulous business. I mean, extraordinary business. So just fingers crossed that all the next releases will do very well, and then Bholaa will come and also do very well. Absolutely, that's the expectation. Thank you. Hi Ajay. Hi. Hi Ajay sir, on your right. Samir here from Movie Talkies. So a lot of people have guessed here, might have guessed here that you are touching the art of Bholaa, but you have kept him as a secret as of now. Abhishek Bachchan. So can you please spill some pains? If you think I've kept it a secret, do you think I'll give you an answer? That's what I'm asking. Are you asking? Right? Can we expect some more surprises? I don't know. You see the film. Surprises means you don't ask. You see, you get them. Ajay, hi. I want to ask you, what are the creatively, what have you explored the changes in the Hindi remake as a director? There are a lot of changes. When you see the film, I mean, we'll talk about that. The characters have been changed completely. The base idea is similar, but otherwise you would see the whole treatment, the way the world is completely different. The emotion is completely different. So whatever I felt should be different for me, I've done that. Tabu, I want to ask you, we lot of female actors these days for last many years. They want to do solo action. They want to do a lot of action movies. Have you ever thought about it? Did you ever think in the past? That's the problem. When they think about doing solo action, you can't fight with the dead. Huh? You have to do action with somebody or the other. You can't think about doing solo action. Main protagonist. Action. मैं ऐसा कभी सोची नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो किया है, आई डोंट थिंक मैंने कभी सोचा था कि मैं इस लेवल का एक्शन कर पाऊंगी, एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर दैट। All right, we'll just take one last question.
Give the gentleman this. The mic. Yes. Mayur. खाना कैसा Thank you, Nitin, firstly, and congratulations to the team. Trailer. सबसे पहले तो मैं बोले ना सर बोला की बात हो रही है तो जाहिर है आई थिंक एक मेरे कलीग ने लोकेश कनकराज का नाम लिया और उनकी मैंने दोनों फिल्में देखी है कैथी और विक्रम। तो जो मेरा एक अनुभव एक बतौर दर्शक ना कि सिर्फ जर्नलिस्ट वो ये रहा है कि ये दोनों फिल्म एक्शन है जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट जॉनर है। बट इन दोनों फिल्मों की जो आई थिंक खूबियत है और जो शायद भोला में भी रहेगी कि कैसे जो उसकी प्राइम कहानी है वो एक फैमिली स्टोरी है। मैं पहले भी कहना चाहता था कि जब आप ट्रेलर देखते हैं तो हम ज़्यादा कहानी खोल नहीं सकते, तो इसलिए आपको एक्शन ज़्यादा नजर आ रहा है। फिल्म में एक्शन बहुत है, लेकिन जो एक्शन कोई भी एक्शन बिना किसी इमोशन के वर्क नहीं कर सकता। तो द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्म इज इमोशन और जो कहानी है। बल्कि इसमें और ज़्यादा ट्रैक्स ऐड है, तब्बू के भी ट्रैक्स एडेड हैं जिसमें एक अलग इमोशन है। सो हमेशा जब आप एक कहानी सोचते हैं तो उसका इमोशन पहले सोचते हैं। अगर आपके पीछे एक इमोशन हो, आप किसी को मारे हैं तो लोगों को मज़ा आता है, वो सीटी ताली मारेंगे। अगर बिला वजह आप किसी को मारेंगे तो आई थिंक किसी का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्शन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका इमोशन सही है कि नहीं और आपका दिल अपनी सही जगह पे। मेरे ख्याल से यही इमोशन जो है मतलब जो ना सिर्फ मास ऑडियंस बट फैमिली ऑडियंस को भी आकर्षित करेगा इसी फिल्म में। आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड फैमिली ऑडियंस व्हेन इमोशंस आर कंसर्न्ड। इमोशन एक यूनिवर्सल इमोशन होता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, इमोशन हमेशा सेम होता है। एक बाप का बेटे के लिए, बेटी के लिए इमोशन, एक माँ बाप का फैमिली के लिए इमोशन, बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए इमोशन, जो भी इमोशन आप ले लें वो सब एक ही होते हैं, यूनिवर्सल। Thank you so much. भूषण जी 3D फिल्म सब इंडिया में फ्यूचर कैसा देख पा रहे हैं? पहले बहुत कम बनती थी, धीरे धीरे शुरू हो रही है। इंडिया में इसका फ्यूचर कैसा पा रहे हैं सिनेमा में? सिर्फ फ्यूचर तो 3D फिल्म्स का आज तक जितनी भी फिल्में 3D आई हैं वो आपने देखा ही है, बिजनेस उनका बहुत ज़्यादा होता है। लाइक तानाजी वाज आर मतलब लास्ट जो हमने साथ में फिल्म की थी तानाजी, उसका बिजनेस 3D का अगर आप देखें तो इट वाज वेरी बिग बिजनेस, 60-65% का बिजनेस 3D से आया। तो आई थिंक 3D अगर फिल्म अगर करेक्ट तरीके से हो, जिस तरीके की भोला की क्वालिटी है, तो फ्यूचर इज देयर। Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for this amazing team here. Now, before we move on to the final photo op, it's only fair that we, invite on stage or this platform some very important people, जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं हो पाता. The co-producers of this movie. Give it up for Mr. Kumar Mangat Pathak, ladies and gentlemen. All the Nadine Shetty and Divyang D'Souza ki. Action director R.P. Yadav ji and Ramzan ji. Ramzan sir is not here. Writers, ladies and gentlemen, Amil, Sridhar, Sandeep and Ankush. Of course, NYVFX wala ko special thanks. And the editor, Dharmendra Sharma ji. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Of course, the entire crew is not here. But yes, center. Ajay sir. the good wishes are always with us. This is